Assalamualaikum students, it's your teacher Ahsan Raza. Today we will study about multiple if-else. So what is multiple if-else? Multiple if-else is used where you have many options and you have to select only one option. This is also called mutually exclusive selection. अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हमने उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, तो इस पर्पज़ के लिए सी प्लस प्लस ने हमें मल्टीपल इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है। आम जिंदगी में भी बहुत दफ़ा हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जहाँ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हमें सिर्फ एक ऑप्शन पिक करना होता है। जैसे कि आप स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं कि इस वक्त शॉपिंग करते हुए हमें बहुत दफ़ा ये सूरत हाल दरपेश होती है जब जहाँ पर हमारे पास एक वक्त में बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं और हमें हम बाउंड होते हैं कि हम अपनी कोई बहुत सारी ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन पिक करेंगे। अब इसमें ऑप्शंस को लिमिट करने के लिए उस वक्त इट कैन डिपेंड अपॉन ओवर परचेजिंग पावर, it can depend upon over choice of colors etc. सो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग करते हुए भी आपको बहुत सारी ऑप्शंस, आप बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जब बहुत सारी ऑप्शंस हैं और आपको सिर्फ एक ऑप्शन ही पिक करना है। व्हाट अबाउट दिस? अगर आप ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं और उसमें से आप टॉपिंग्स चूज, उसमें से आपने उसका साइज़ चूज़ करना है, इट्स आइदर स्मॉल, मीडियम, लार्ज और फैमिली साइज़। तो ज़ाहिर है एक वक्त में दो साइज़ तो, एक पिज़्ज़ा के लिए दो साइज़ तो मेंशन आप नहीं कर सकेंगे, तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं और आपने उसमें से सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो पिक करनी है। अब जरा इसका जरा सिंटेक्स देखिएगा कि जो मल्टीपल इफ एल्स का सिंटेक्स है वो किस तरीके से है। सबसे पहले आप कीवर्ड इफ यूज करेंगे और उसमें पहली कंडीशन देंगे और उसमें उसका जो एसोसिएटेड कोड है, ब्लॉक वन कह देते हैं उसको, वो उसमें लिख देंगे, राइट। फिर आप लिखेंगे एल्स इफ और उसमें दूसरी कंडीशन मेंशन कर देंगे और उससे एसोसिएटेड कोड, फिर एल्स इफ कंडीशन थ्री और उससे एसोसिएटेड कोड। आप इस इफ एल्स लैडर को जितना मर्जी लेंथी कर सकते हैं और आखिर में सिंपल एल्स इसलिए लगाया है कि अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब ये जो सी प्लस प्लस कंपाइलर है ये टॉप से चेक करना शुरू करेगा, ठीक है, कि कौन सी कंडीशन जो है वो ट्रू है। अगर पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी सबको स्किप कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसी सूरत में कंट्रोल जो है वो अगली कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन टू को, और अगर ये ट्रू है तो इसका एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द लैडर विल बी स्किप्ड। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो गया तो फिर कंडीशन थ्री चेक की जाएगी और अगर कंडीशन थ्री भी फॉल्स, अगर कंडीशन थ्री ट्रू है तो फिर उसका एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगर कंडीशन थ्री भी फॉल्स हो जाती है तो फिर अगली कंडीशन चेक हो जाएगी और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एल्स में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। सेम सिचुएशन is explained in the flow chart. If condition 1 is true, this code will be executed. If condition 1 is false, then condition 2 will be checked, right? And if it is true, this piece of code will be executed, and if condition is false, next condition will be checked. If it is true, then this piece of code will be executed, and if it is false, then control will be shifted to next condition and so on. Now using this if else multiple if else, let's create some program. Let's create a program that takes input from user, marks of student in 3 subjects out of 100 each, calculate total marks obtained, percentage and grades awarded as per following scheme. अगर तो जनाब ग्रेड हुआ, अगर परसेंटेज हुई 90 से ज़्यादा या उसके बराबर तो ग्रेड ए मिलेगा, और अगर 80 से ज़्यादा हुई तो ग्रेड बी मिलेगा, अगर 70 से ज़्यादा हो तो सी एंड सो ऑन। लेट्स एनालाइज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हम फ्लो चार्ट को ज़रा देखिएगा, स्टार्ट करेंगे, अपने वेरिएबल्स बनाएंगे, 3 सब्जेक्ट्स में मुझे इनपुट चाहिए, ठीक है। तो मैंने प्रोग्रामिंग के लिए से PRG, डाटा स्ट्रक्चर के लिए DS, डेटाबेस के लिए DB, आप कोई और 3 सब्जेक्ट रख लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, व्हाटएवर। ऑब्टेन मार्क्स हमने इसलिए वेरिएबल बनाया कि इन तीनों को ऐड करके रिजल्ट इसमें स्टोर करेंगे और हम एक कांस्टेंट बनाएंगे टोटल के नाम से। देखें सारे लेटर्स कैपिटल लिए हुए हैं, मैंने पता लग रहा है कि ये कांस्टेंट, और इसमें क्या स्टोर करूंगा 300। परसेंटेज के लिए वेरिएबल लूंगा PER और ग्रेड के लिए GRD, राइट। इन सब की डाटा टाइप इंट हो सकती है, इसकी भी डाटा टाइप इंट होगी, परसेंटेज की फ्लोट होनी चाहिए और ग्रेड क्योंकि करैक्टर है तो 4 डाटा टाइप होगी इसकी।
लेट्स टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। उसके लिए हम यूजर से पूछेंगे एंटर मार्क्स इन प्रोग्रामिंग, पीआरजी में स्टोर करेंगे, एंटर मार्क्स इन डाटा स्ट्रक्चर डीएस में स्टोर करेंगे, एंटर मार्क्स इन डेटाबेस डीबी में स्टोर करेंगे। आफ्टर टेकिंग इनपुट हम प्रोसेसिंग करेंगे, यानी कैलकुलेशन और कंपैरिजन। कैलकुलेशन में मैं क्या करूंगा, तीनों वेरिएबल्स जिसमें मार्क्स स्टोर हैं, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड स्टोर है, ऐड करूंगा और टोटल मार्क्स इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया हमने। अब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट होती है, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। नाउ परसेंटेज जो भी आई है वो पीईआर में स्टोर है। अब हम इफ कंडीशन से चेक करेंगे कि परसेंटेज इस वक्त क्या है। इफ percentage is greater or equal to 90, grade will be A. If percentage is greater or equal to 80, grade will be B. If percentage is greater or equal to 70, grade is equal to C. If percentage is greater or equal to 60, grade is equal to D. If percentage is greater or equal to 50, grade is equal to E. Else grade is equal to F. इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज वो हर कंडीशन को, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी और ग्रेड ए आ गया तो बाकी सारे को स्किप कर देगा। और अगर ये फॉल्स है 90 वाला तो फिर 80 को चेक करेगा, अगर ये फॉल्स है तो फिर इसको चेक करेगा, अगर ये फॉल्स है तो फिर इसको चेक करेगा, और अगर ये फॉल्स है तो फिर इसको चेक करेगा, राइट। और अगर जो भी कंडीशन ट्रू है एसोसिएटेड कोड चूज करेगा। से हमारी परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल टू 60 है तो यहाँ से ग्रेड को डी, ग्रेड में डी स्टोर करेगा और कंट्रोल हमारा जो है वो इफ मल्टीपल इफ एल्स स्ट्रक्चर के बाद शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ कनेक्टर लगा हुआ है, कनेक्टर फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर हम आउटपुट दे देंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड आ चुके हैं, परसेंटेज आ चुकी है और ग्रेड आ चुका है। हमने उसकी आउटपुट दे दी और उसके बाद इट विल बी स्टॉप्ड, program will be stopped. Now let's take the program. Alright children, let's start our program. As we discussed earlier, we will declare the variables int, three variables for three subjects, prg for programming, um, db for database, and ds for data structure, and one for obtained marks, say obt mks. Now we will declare a constant for total marks for with the help of const qualifier, const int total is equal to 300. Now next step, we will declare a variable for to store the percentage, and finally a character type variable to store the grade, say grd. So all done with the variables. Now as per our flowchart, now we will take input from the user, cout, enter marks obtained in programming is equal to, and cin, keep in mind we have used a terminator, so there is no harm in using cin after this. Cin prg. Similarly, let's copy it, let's paste it, shortcut key for pasting, shift insert, once more shift insert. Now enter marks obtained in programming के बाद आ गया जी enter marks obtained in say database. Say a variable we have declared for it is db, and finally the enter marks obtained in data structure, cin, and the variable for data for storing the marks obtained in data structure is ds. So for till now what we have done, we have declared required variables and constants, and we have taken input from the user, enter marks obtained in programming. This is just a message. A cursor will be blinked on the screen due to this cin,
and whatever number we will enter will be stored in PRG and here in DP and here in DS. Now input is complete. Now it's time for processing, and then in the first step we will calculate the total marks obtained, and for that we have declared a variable OBT MKS is equal to DB plus whatever in whatever order you can enter add these marks, PRG plus DB plus DS. Okay, after adding these marks we will calculate the percentage. Now formula for the percentage is marks obtained OBT MKS. Now that contains the sum of PRG, DB and DS divided by over constant total multiplied by 100. Now issue over here is that OBT MKS is an integer, total is also an integer, and OBT marks are either less than total or equal to total. In most of the cases it will be less than total, so it will generate a number 0 point something, and when an integer is divided by another integer result will be integer. So the fractional part will be truncated, अशारिया के बाद वाला जो हिस्सा है वो ट्रंकेट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ जीरो रह जाएगा, तो परसेंटेज हमेशा जीरो आएगी। इससे बचने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको इन दोनों में से किसी एक को कास्ट, अब कांस्टेंट तो कास्ट हो नहीं पाएगा, तो हम अपने इस वेरिएबल को फ्लोट में कास्ट कर लेते हैं, राइट। सो अब ये ओबीटी एमकेएस जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, अब टोटल से डिवाइड करेगा तो रियल नंबर आएगा इनटू 100, सो परसेंटेज विल बी स्टोर्ड इन पीईआर। now we will use if else, multiple if else, to determine the grade on the basis of a condition using the percentage. If percentage is greater than or equal to 90, then G or D is equal to A. Notice that I have written the character in the single quote. Else if percentage is greater or equal to 80, GRD is equal to B. Let's copy it. Paste. Paste. Once again paste. Now let's just change the numbers. Percentage is greater or equal to 90, percentage is greater or equal to 80, now percentage is greater or equal to 70, and the grade will be C. And if percentage is greater or equal to 60, grade will be C. And if percentage is greater or equal to 50, grade will be D. Sorry, A, B, C, here we'll have D, and for 50 we will have grade E. And finally, if none of the uh, condition has met, then just type else percentage, sorry, grade is equal to F, and that's obvious less than 50. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम ये करेंगे कि हमने ग्रेड भी डिटरमिन कर लिया, कैलकुलेशंस भी कंप्लीट कर ली, अब हमने सिर्फ इसका आउटपुट देना है, ठीक है। ओके, आउटपुट देने के लिए हम ज़ाहिर सी आउट यूज करेंगे। सबसे पहले हम मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखेंगे, ठीक है। ओके, यू ऑब्टेन्ड, ऑलराइट, हाउ मेनी मार्क्स which are stored in variable OBT MKS. Then I want to write with this number out of insertion operator, out of what? Total.
which contains the total marks, right? And L. And in next line, see out, your percentage is PER, and you scored, or say you obtain, you have obtained grade G or D, and L. That's it. Let's save it, compile, no errors. Okay, run. Okay, let's enter a dummy data. 90, 90, 90. So 90 plus 90 plus 90 is 270. Therefore, you obtain 270 out of 300, and your percentage is 90, and you have obtained grade A. Perfect. All right, students. Now let's take the next program. Write a program that displays a menu. Number one, area of rectangle. Formula for area of rectangle is area is equal to length into width. Circumference of the rectangle, that is circumference is equal to 2 times length plus width. Volume of cuboid, it's a 3D figure, so volume is equal to length into width into height. And number four, exit. So this is a menu which will be which should be displayed on the screen. Then it should ask the user to enter your choice, either 1, 2 or 3. And when user will enter the choice, say 2, it should ask the for the length and width of the rectangle, and should display the circumference of the rectangle. And similarly, if user enters suppose 3, it should ask from the user height, width and length of cuboid and display its volume. And if user enters 4, it should exit from the program. Okay, so and if user does not enter a valid value from 1 ranging from 1 to 4, then it should display a proper error message and display the menu again. Let's take the program. All right, students, as we have discussed the program, we have to show a menu on the screen, and we have to calculate the area of rectangle, we have to calculate the circumference of rectangle and volume of a cuboid. For that, I will need a variable to store the height of the rectangle, say ht. Okay, width of the rectangle, say wd. Okay, say to store the area, say let's take variable area, and for circumference circ. And similarly, to calculate the volume, VOL, height, and one variable for length, LENGTH. Let's take the full version. Length, HEIGHT, and for width, WIDTH. Okay, that's it. Now we will also need a variable to take the choice from the user, that is from 1 to 4. So you can either take integer or character भी आप ले सकते हैं, whatever. Let's take character, char opt for option. Okay, now let's display the menu. See out, 1, area of rectangle. Okay, and L or backslash n, whatever you want to use.
All right, see out. 2. Circumference of rectangle. Okay, and finally see out. Say, yes, we have to calculate the volume of cuboid. Okay, now what's next? See out. Remember, number 4, exit. Now we have to take input. This is just a menu that will be displayed on the screen. Now I would like to ask from the user to enter the choice that is from 1 to 4. See out. Enter your choice. सी इन, और हमने कौन सा वेरिएबल लिया ऑप्शन पूछने के लिए? ओपीटी. सो यूजर जो भी एंटर करेगा 1 2 3 और 4 विल बी स्टोर्ड इन ओपीटी. नाउ इफ ओपीटी इज इक्वल टू, कीप इन माइंड कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल साइन, सिंगल इक्वल जो है वो असाइनमेंट होती है. If OPT is equal to, and why I'm writing one in single quotes, because the data type of OPT is character. That's why it has to be written in single quotes. Okay, the braces of if block. If OPT is equal to 1 and if option is 1, what we have to calculate? Area of rectangle. So we will code accordingly in if block. All right, see out. What do we need to calculate the area? Height and width of rectangle. Enter height of rectangle is equal to C in height. Okay, let's correct it. The extraction operator. Now see out. Enter width of rectangle. See in width. After completing the input, we will calculate the area. So area is equal to length. Sorry, I should write here enter length of. Sorry for that. C in GTH. So what's the area? Length into width. And finally we will show the result. See out. Area is equal to stored in variable area and right. So the whole program to calculate the area of rectangle is enclosed in if block if opt is equal to 1. What's next? We'll go for the second choice, that is else if opt is equal to 2, यानी अगर यूजर ने 2 एंटर कर दिया तो अब इस ब्लॉक में 2 का मतलब क्या है कि हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द रेक्टेंगल. अकॉर्डिंगली हम उसके मुताबिक यहाँ पे कोड कर लेंगे. तो उसके लिए हम ये करते हैं कि इसी कोड को कॉपी करेंगे
ये जो हमारा कोड था एरिया कैलकुलेट करने के लिए, सेम कोड को हम यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं और ये इसी तरह आ जाएगा सी आउट एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ हम फार्मूला चेंज कर देंगे। सर्कमफ्रेंस के लिए हमने क्या फार्मूला लिए हुए है, सी आई आर सी, सर्क इज इक्वल टू 2 टाइम्स length plus width. So this is the formula to calculate the circumference, and here we supposed to give the output, so we'll make changes accordingly. Circumference is equal to stored in variable CIRC. That's it. And for 3, in which you have to calculate the area of cuboid, else if अगर यूजर ने एंटर कर दिया ओपीटी के अंदर क्या चीज 3, तो फिर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कोड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करने के लिए, शिफ्ट इंसर्ट शॉर्टकट की टू पेस्ट। सर देखिए एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ओके, एंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, और हमें एक चीज और चाहिए अब, सी आउट एंटर हाइट ऑफ रेक्टेंगल is equal to C in height. Now we have length, we have width, we have height. Now we will just use the formula, and that is volume is equal to length into width into height. And finally we will display the volume. Is equal to, and we have stored the result in variable VOL. Now else if OPT is equal to 4, अगर यूजर ने 4 एंटर किया तो वो तो एग्जिट के लिए, तो उसके लिए हम बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे एग्जिट 0, that is used for normal termination, right? And the header file for that can be either process.h or std standard library.h. So we'll use process.h. There we go. इसके बाद ही हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम एग्जिट फंक्शन को यूज कर सकें। process.h. all right. Oh, why not to give a suitable message before that, see out, goodbye, right, backslash n, go to next line, then to halt the screen for a moment, catch, and then we will exit, right? And finally else means if user has entered a value other than 1 2 3 4, then what should happen, the screen should be cleared. First we should give a suitable message, error, you have entered a wrong option. Backslash n means we'll go to next line. Please enter a value between, please enter a value, oh, sorry, from 1 to 4, backslash n. So this is a suitable message we have given.
Now after that, I want to clear the screen. Before that, let's halt the screen using Getch. Clear the screen, and we will use a command go to that will move the cursor to a specific point, and that specific point is here. We want to display over menu again. So we will use a label over here. A label is just like a variable name. The rules for declaring a variable are same as that of declaring variable name. So let's use a label, say LBL. What do you say? Right? So we'll just use the name of the label, whatever name whatever name you have suggested. You have to place a colon after that. And here, but guess what can I do here now? Go to where? Go to LBL. So cursor will be immediately moved to this point here. A screen will be cleared, and again our menu will be displayed, and so on. Okay, let's save it. Let's compile it. Okay, let's run it. So here we go. You can see a menu on the screen: 1 for select area, 2 for circumference, 3 for volume, 4 for exit. So let's try 4. See, goodbye, and that's it. Let's run it again, and let's enter this time 3. Enter length of rectangle, say 2. Width of rectangle, say 2. Height of rectangle, say 2. Volume is 8. Let's make a correction. I should not I should not have written rectangle when coding for cuboid. Enter length of cuboid. Enter width of cuboid, and enter height of cuboid. As such, there was nothing wrong for execution of the program, but a suitable message should be displayed on the screen. Let's save it, compile it, and run it. Let's again enter 3 and see, enter the length of cuboid. The most appropriate message in this case should be like this. So 12, say 12, say 12. Okay, here we go. 12 into 12 into 12, 1728. That's it. Yes. All right, students. Enough for today. Keep practicing. Inshallah, see you next time with the topic of nested if. Allah Hafiz.